अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये कैट आई है और इस कैट के जो हाइंड राइट लिम्ब है उसके जो फीमर है वो फीमर के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो गया। अगर आपको नजर आ रहा हो ये फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड है और इसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और जैसे ही हम आपको ये दिखाते हैं तो इसके अंदर भी ये जो हीमाटोमा बन चुका है तो ये बता रहा है जो ब्रोकन बोन है वो इसके इर्द गिर्द के मसल्स को रप्चर कर रही है। नो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर रॉड पिनिंग और वायरिंग करेंगे जिससे ये होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर अपनी जगह पे आ जाएगा और जो स्प्लिंटर्स हैं जो इसकी एक स्पाइक्स बने हुए हैं जो मसल्स को डैमेज कर रहे हैं और जो मे भी नर्व्स को भी डैमेज कर सकते हैं जिससे परमानेंट डैमेज काज हो सकता है एनिमल के हाइंड लिम्ब के अंदर, उसको हम कंटेन कर देंगे और जानवर इससे दोबारा अपनी नॉर्मल गेट को बहाल कर सकेगा, दोबारा चलना फिरना उसका आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हम रॉड एंड पिनिंग करेंगे और स्ट्राइक की वजह से हम आपको ब्लड नहीं दिखा सकेंगे। सर्जरी के बाद हम आपको इसकी कंडीशन और इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर और प्रोग्नोसिस के बारे में बताएंगे। The procedure involving a rod, intramedullary nail, and cerclage wire is a surgical technique used by orthopedic surgeons to repair specific type of complex femur fracture, particularly long oblique or spiral fracture, or those with significant fragments. The cerclage wire acts as an adjuvant to help achieve and maintain anatomical reduction, which the rod then provides primary stability for. This is a complex surgical procedure performed in a hospital setting under general anesthesia by trained medical professionals. It is not something to attempt yourself. Here's a general description involved few steps. So the surgical procedure starts with patient preparation and anesthesia. The patient is placed under general anesthesia and the leg is positioned on special orthopedic table or lateral recumbency to allow access the use and image of intensifier like real-time X-ray. Surgical approach: an incision is made to access the femur, often using a minimal invasive approach to preserve the soft tissue and blood supply as much as possible. Fracture reduction: the surgeon manually realigns the broken bone fragments into correct anatomical positions. Pointed reduction: forceps and other tools may be used to hold the pieces in places temporarily. Cerclage wire application indicated by fracture pattern: long oblique or spiral fracture where the length is at least twice the bone's diameter. Cerclage wires or cables are passed around the bones using special wire passer instrument. The wires are positioned perpendicularly to long axis of the bone and spaced about 1 centimeter apart. They are tightened securely using a specialized wire tightener, ensuring no soft tissue is trapped between the wire and the bone. Multiple wires are typically used for stability and they are generally applied before the main rod. Intramedullary rod insertion: an entry point is created at either the hip antegrade approach or the knee retrograde approach using an awl or drill. A guide wire is inserted in medullary canal, the hollow center of bone, and across the fracture site. The canal may be re-aimed, enlarged to appropriate size, and a metal rod is guided over the wire and inserted through the entire length of femur. Rod locking: screws are inserted through the bone and the rod at both top and bottom ends, proximal and distal locking to prevent the rod from rotating or shortening and to stabilize the fracture completely. Seventh and last procedure is clear and aftercare. This is very much crucial and very much important. The guide wire is removed and incisions are closed with sutures or staples. An X-ray is performed to confirm proper placement and alignment. The patient recovery involves pain management and often a course of physical therapy and blood thinners to prevent the complications. The combined techniques enhance the stability of repair, facilitates the fracture healing and allow for earlier mobilization in many cases. Let's give answer to few of your question. Question number 1: how do we put rod in broken femur? An intramedullary rod is inserted into top of the femur and guided down the fracture site into the bottom portion of the bone. Surgical screws are inserted in the top
end of femur through the rod and into femoral head to secure the rod. Second question is it good to remove a rod from femur? Answer is it is necessary to remove rods and nails after treatment. Once the bone has fully healed, the rod and nail no longer serves a purpose and may be removed. This is typically done after an year. सर्कुलर मूवमेंट को रोकने के लिए हमने इंट्रामेडुलरी रॉड पास की है और सर्कुलर मूवमेंट को रोकने के लिए हमने जो सर्कुलाज वायर इसको दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कंप्लीट है। अल्हम्दुलिल्लाह कैट ने राइट लिम्ब का रिफ्लेक्स भी दिया आफ्टर सर्जरी। तो उम्मीद है इसके बाद ये अपनी जो रिकवरी है वो तेज़ दिखाएगी और इसका हम दोबारा आपके साथ एक और एक्सरे शेयर करेंगे आफ्टर सर्जरी का।